Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program which gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock markets. And today being Sunday, we'll be also taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and 23421050. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444। हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Amrish. The top stories. Foreign investors pump in nearly 31,000 crore rupees into Indian equities market in the first fortnight of July. Inflows crosses 1 lakh crore rupees in 2023. And government reduces the concessional selling price of tomatoes to 80 rupees per kilogram. विदेशी निवेशकों ने जुलाई के पहले 2 सप्ताह में भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 31,000 करोड़ रुपए डाले। वर्ष 2023 में कुल निवेश 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया और सरकार ने टमाटर के रियायती बिक्री मूल्य को घटाकर 80 रुपए प्रति किलो किया। And now for all the details, let's start off with foreign portfolio investors. Continuing their unabated investment streak, foreign investors pumped in nearly 31,000 crore rupees into the Indian equities market in the first fortnight of July. As per the depositories data, the foreign portfolio investors or FPIs invested a net sum of 30,660 crore rupees in the Indian equities market during the period 3rd of July to 14th of July. They also invested 1,076 crore rupees in the debt market during the same period, taking the total investment in the Indian capital markets to 31,736 crore rupees. This came following an investment of 47,148 crore rupees in June, the highest level since August 2022. Before that, FPIs invested 43,838 crore rupees in equities in May, 11,631 crore rupees in April, and 7,936 crore rupees in March this year. और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता आशीष हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी, सवाल पूछिए। सर, मैंने 2016 में क्वांटम के टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मैं उसका रिडम्पशन लेता हूँ तो जो रिडम्पशन मनी है वो क्या टीडीएस काट करके मेरे को मिलेगी क्या? मतलब इसमें टीडीएस रिलेटेड क्या प्रोविजन है सर, ये बताइए प्लीज। थैंक यू सर। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में टीडीएस आपकी इन्वेस्टमेंट से काटा नहीं जाएगा। अगर आप रिडीम करेंगे तो आपके पास जो भी आपका वैल्यू होगा, जितने भी यूनिट्स हैं, उसके हिसाब से आपके पास पूरा पैसा आएगा। लेकिन आपको अपनी रिटर्न फाइल करते हुए उस पे जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पे करना होगा।
let's move on and take our next caller. We have Jitendra joining us from Jaipur in Rajasthan. Good evening, Jitendra, and welcome to Market Mantra. हाँ, थैंक यू। अच्छा, इक्विटी सेविंग फंड और डेट फंड एक ही होता है क्या? जी नहीं, थोड़ा अंतर है इक्विटी सेविंग्स फंड और डेट फंड्स में। डेट फंड्स की अगर हम बात करें तो ये वो फंड होते हैं जो आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जो कंपनीज बॉन्ड इशू करते हैं या सरकारी बॉन्ड होते हैं, उनमें ये पैसा लगाते हैं। इन फंड्स में रिस्क कम होता है, वॉलेटिलिटी काफी कम होती है। ये आप ये मानिए कि आपका पैसा ऐसे सिक्योरिटीज में लगता है जिनसे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड को मिलता है और वो आगे आपकी एनएवी के बढ़ोतरी में दिखता है। और इनमें मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। इक्विटी सेविंग्स फंड की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे फंड्स होते हैं, इसमें आप तकरीबन आप मानिए कि 35 से 40% तक पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता है। बचे हुए पैसे को से आपको फिक्स इनकम जैसा ही पे ऑफ मिलता है। तो ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें कुछ निवेश आपका इक्विटी में, कुछ निवेश आपका डेट में रहता है। और मुंबई से हमारे श्रोता संजय लाइन पर मौजूद हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल है, क्या स्मॉल कैप फंड्स बबल जोन में है? क्या स्मॉल कैप फंड्स को सेल करके लार्ज कैप में पैसा करना चाहिए इस समय? देखिए, स्मॉल कैप, ये बात सच है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स के जो वैल्यूज हैं उनमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है हाल फिलहाल में। पिछले अगर हम एक साल की भी बात करें तो इनमें बाकी मार्केट सेगमेंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा जो उछाल देखा गया है। एक साल में 35-40% रिटर्न वाकई में बहुत ज्यादा होता है, जो कि स्मॉल कैप्स में देखा गया है। देखिए, बबल में है कि नहीं है ये एसच कहना बड़ा मुश्किल है, और टिपिकली ये मार्केट सेगमेंट के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ स्टॉक जरूर शायद बबल टेरिटरी में होंगे, कुछ स्टॉक हो सकता है अभी भी स्मॉल कैप टेरिटरी में देखे जाएंगे कि कुछ अभी भी कुछ अच्छे निवेश इनमें अवेलेबल होंगे। मेरे ख्याल में एक निवेशक को इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने पूछा कि स्मॉल कैप से लार्ज कैप में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके लिए आगे निवेश का कितना टाइम होराइजन आप रख के चल रहे हैं। अगर आप को जो पैसा आपका मार्केट में लगा है अगले 1-2 साल में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो मेरा ख्याल ना स्मॉल कैप ना लार्ज कैप, आपको इक्विटी में ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके लंबे समय का निवेश है तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप एक पोर्टफोलियो में आपके सप्लीमेंट्री रोल अदा करने में सक्षम होते हैं। आपका 15 से 20% तक पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में लगा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप 15-20% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप बने रहिए, लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट के इस उछाल की वजह से स्मॉल कैप बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में आपके पोर्टफोलियो में हो गए हैं तो जरूर उसको थोड़ा सा आपको बेच के सेफर लार्ज कैप्स की तरफ रुख करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो में उठापटक करने की जरूरत नहीं है। एक सप्लीमेंट्री एलोकेशन के तौर पर आप उसको देखिए, 10, 15, 20% तक उसमें निवेश रखिए, और अगर उतना ही है तो मेरे हिसाब से लंबे समय के पैसे के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। And Ashutosh, just supplementary to what he is asking, as you yourself said, some of the funds have gone up by 35-40%, small cap especially. Will it be a good idea for people to encash it right now? Just under a year, you're getting a rate of return of 35-40%, and then maybe re-enter subsequently. See, on hindsight, I mean, the idea with investing is to buy low and sell high, right? But whether right now the high is high enough is only a hindsight, because markets can continue to remain in an overbought territory, in an overheated territory for a very long time. And if somebody sells now, the bigger dilemma would be when to re-enter, because if the markets keep going up for the next 6 months, next 1 year, next 1.5 year, an investor who exits now will be under a tremendous pressure. The opportunity loss can be very, very disappointing. And such a person, if the market continues to keep going up, might end up re-entering at a further high and, further make a disappointing decision. On the contrary, if the market starts to fall, then again it poses a dilemma as to when to re-enter, because when the markets fall, nobody knows where is the bottom. So one can keep waiting, and the markets turn when you least expect them. Okay, we saw that during the first lockdown in March.
2020 when the markets crashed after the first lockdown. Nobody knew that the markets would rebound so strongly, and in a matter of months they would recoup their previous levels and go on to make further highs. So the people who exited at that time, continued to remain out. They could not enter back and continue to be in a dilemma. So the right approach is that if you have the long-term horizon, have a stated asset allocation for yourself. For mid caps and small caps, you can have a 15-20% allocation, not more than that, and stick to that. Because of these market segments outperforming, if that 20% has become, let's say, 35% in your portfolio, then it's wise to redeem up to 10-15% and invest in safer large caps. So you stick to a predefined asset allocation, and as and when there is a big diversion from your asset allocation, then you bring it back to its original form. And this way, if you take a decision, it is much more anchored to your needs rather than trying to take a call on the markets, and is much more sustainable and does not lead to disappointments. So, and this formula works irrespective of the market level, whether its market is at its highest levels or at its lowest levels. Once you are guided by your stated asset allocation, you don't need to worry. And I think that is a time-tested approach which works irrespective of what the markets are doing. Yeah. Let's continue taking phone calls. And joining us next is Kashinath from Chennai. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, Market Mantra team. Yeah, please go ahead. Put your question. मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि वैल्यू रिसर्च के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर धीरेन्द्र सर है जी, जो हमारा आशुतोष गुप्ता जी, वो उनका पोजीशन वैल्यू रिसर्च में क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। और आशुतोष जी का मेरा सवाल ये है कि सर यूटीआई का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें बने रहना या दूसरे में ट्रांसफर करना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद जी। Ashutosh ji is carrying forward the legacy along with Dhirendra ji of Value Research. Yes, Ashutosh, if you want to add on to that. Sure. So UTI FlexiCap, I believe आप बने रहिए. You can stay put in the fund. The last 1 year has been very disappointing for this fund, and maybe that's what is causing some doubts in your mind. This fund is almost at the bottom of its FlexiCap category if you look at the last 1 year performance. But I think you can give some more time. If you look at a slightly longer term horizon, the performance has not been as disappointing as what the near term suggests. So you can maybe give it a little more time. But again, if this fund is a very big holding or this is the only fund that you have in your portfolio, then I think it's a cause of concern and you should be diversified a little bit more. Otherwise, you can give it a little more time. आशुतोष जी, हमने जो एफपीआई का जितना इन्वेस्टमेंट है उसके आंकड़े अभी रंगाने पड़े, तो आपका क्या कहना है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड सेगमेंट है उस पे इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लगातार बढ़ोतरी का किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, मार्केट्स, अगर आप इंडियन मार्केट्स का जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप उस तरह देखें तो पिछले कुछ सालों में जो भारतीय बड़े निवेशक हैं, भारतीय इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इनमें निवेश काफी बढ़ा है, तो इनका जो काउंटर बैलेंस है एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट, वो काफी बढ़ा है। पहले हम देखते थे पिछले दशक में या उससे पहले कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाते थे मार्केट में या रिडीम करते थे तो उसका बाजार पे बहुत बड़ा प्रभाव होता था। लेकिन अब म्यूचुअल फंड्स एक काफी अच्छा काउंटर बैलेंस दे पाते हैं। अगर एफपीआईज या फॉरेन इन्वेस्टर्स रिडीम भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट लगातार बाजार में जा रहा होता है तो मार्केट्स उतना शार्पली रिएक्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे। और पिछले कुछ टाइम में हमने ये देखा है कि क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगातार मार्केट में लग रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी लग रहा है, तो उसकी वजह से भी मार्केट्स में जो एक शार्प रैली है, बिकॉज काफी सारा पैसा मार्केट्स ने एब्जॉर्ब किया है, तो एक उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स पे एज सच उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो इम्पैक्ट है वो मार्केट ड्रिवन है। जैसे कि अगर जब मार्केट्स में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, स्टॉक्स का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, तो म्यूचुअल फंड्स को भी परेशानी होगी स्टॉक सिलेक्शन में। जो म्यूचुअल फंड्स के पास इंक्रीमेंटल मनी आ रहा है, फंड मैनेजर्स को काफी सूझबूझ के साथ, काफी सोच समझकर वो पैसा मार्केट्स में निवेश करना होगा। कुछ फंड्स में कुछ थोड़ा सा कैश बिल्डअप भी हमने देखा है, खासकर स्मॉल कैप फंड्स में, क्योंकि वहां फंड मैनेजर्स को बहुत
ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस वक्त नहीं दिख रही हैं। इन्वेस्टेबल स्टॉक्स जो कि एक उनको अच्छी वैल्यूएशंस पर अच्छे दाम पर मिले तो वो इन्वेस्ट करें। तो कुछ फंड्स कुछ थोड़ा कैश भी होल्ड करके बैठे हैं कि जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हम तब इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह का इम्पैक्ट है मार्केट्स की वजह से। Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio. And as you know, Sundays are dedicated for mutual fund and related issues. And we have our mutual fund expert, Ashutosh Gupta, answering all your questions, queries and doubts. And just to remind our phone numbers to our listeners, our phone numbers are 2331 4444 23717106, and our third dedicated line is 23421050. And as always, you need to prefix the STD code of the capital, that's 011 before the numbers. और दिल्ली से हमारे श्रोता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। टीम प्रदीप बोल रहा हूँ जी दिल्ली से। सर मुझे अपना पोर्टफोलियो ना डाइवर्सिफाइड करना है। जो मेरी एसआईपी चल रही है ना, मैं अगर उन एसआईपी को कैंसिल कर देता हूँ, रिडीम नहीं करता, तो क्या मुझे कोई नुकसान होगा फ्यूचर में? और दूसरा, क्या मेरे पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा भी मुझे कोई फंड लेना चाहिए? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ लिए हैं। प्लीज सजेस्ट करें सर। देखिए, पहला आपका सवाल कि अगर आप एग्जिस्टिंग एसआईपीज को बंद कर देते हैं तो उससे कोई नुकसान होगा? नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका जो अभी तक पैसा निवेश कर चुके हैं आप, वो उन फंड्स में लगा रहेगा, आगे उनमें लगना बंद हो जाएगा। हाँ, नुकसान तभी हो सकता है कि जब आप वो एसआईपी बंद करके और कहीं इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि लंबी इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी अपने जरूर कंटिन्यू रखिए। हाँ, ये अलग बात है कि उन फंड्स को छोड़ के अगर आपको लगता है कुछ और बेहतर फंड है, आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, तो आप वो जरूर करिए। लेकिन वो एसआईपी बंद करने का एज सच कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि क्या फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अलावा भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल होता है इसमें, वो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। लंबे समय का निवेश के लिए इक्विटी एक अच्छी एसेट क्लास है, लेकिन उसमें भी आप देखें कि अगर आपको थोड़ा मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़ा अगर आप नर्वस फील करते हैं, कुछ आपको घबराहट होती है, तो थोड़ा आप उसमें डेट कंपोनेंट ऐड करिए। 20-25% आप किसी अच्छे डेट फंड में रख सकते हैं। कोई भी आप अच्छा डेट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ले सकते हैं, उसमें आप ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 100% इक्विटी पोर्टफोलियो से कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट के उतार चढ़ाव में ज़्यादा रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर आपको उससे घबराहट नहीं होती है, लॉन्ग टर्म का पैसा है, तो आप मेरे ख्याल आपके पास 2 से 3, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी आप मंथली कितना करते हैं, मेरा ख्याल 2 से 3 अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में डाइवर्सिफाइड रहते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा जो कि एक सप्लीमेंट्री एलोकेशन के तौर पर एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड में 10-12% पैसा इन 2 फंड में रखते हैं, तो मेरा ख्याल ये एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से काफी ठीक ठाक है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपके फंड अलग अलग फंड हाउस के हों, अलग अलग फंड मैनेजर इनको मैनेज करते हों, क्योंकि आप एक ही फंड हाउस के अगर 2-3 फंड ले लेंगे तो हमें लगेगा कि हम डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन एक्चुअली में हम डाइवर्सिफाइड नहीं होंगे। तो आप 2 से 3 अलग अलग फंड हाउस के फंड्स में इन्वेस्ट करिए और मेरा ख्याल ये एक काफी पर्याप्त पोर्टफोलियो रहेगा। Right, let's move on and take our next caller. We have Gaurav joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening, Gaurav, and welcome to Market Mantra. Thank you, sir. Sir, my question is about a retirement plan. So I have someone has an investment in mutual fund, equity funds, flexi cap, small cap, mid cap. So what should be his strategy for retirement? Should he keep all the money in the balanced advantage fund and some in debt fund for the next 2 years requirement, or what normally you would advise for a person who is retiring in next say 5 years? And how do you see tech funds future? Are they have done badly, but they are improving? How do you see them in near future? Thank you. Okay, so Gaurav, your first question regarding the retirement plan, somebody retiring in the next 5 to 6 years. Well, yes, the idea is that look at these 5 years as a transition phase, because in the initial years, for retirement is one of the longest term goals for one's personal finances that one can have. So right up till, say 5 to 6 years before retirement is what you can broadly think of as an accumulation phase, where you try to earn handsome returns, and therefore equity is the best asset class and should be a dominant
proportion in your portfolio. Look at these last 5 to 6 years ahead of retirement as more of a transition phase before you hit retirement. And in these years, the idea should be that you gradually pare down equity and add a little bit of debt in the portfolio. So it could be a 50-50 equity debt portfolio by the time you hit retirement, or maybe, a 35 equity and a 65 debt portfolio. But the idea should be that by the time you reach retirement age, you should have a reasonable mix of debt and equity in your portfolio. If currently, as you said, that Balanced Advantage funds are predominant holdings in the portfolio, then I think that is good enough, because Balanced Advantage funds anyways would have a reasonable mix of about 50-60% equity and around that much debt. So they are a pretty balanced hybrid kind of a fund, and that should also serve the purpose. Now, once you hit retirement, the idea is that your portfolio should be configured in a way that it can generate regular income. The volatility of the market does not come in the way of generating regular income, but at the same time there should continue to be a reasonable amount of equity, because retirement is still a long-term goal. You are looking at 20-25 years of retirement, where it is very essential to beat inflation and generate returns. Otherwise, one can run the risk of outliving one's savings. Therefore, having a reasonable amount of equity, say 25 to 30 to 35% in equity, is still very essential, and the remaining amount can be there in high quality, very safe kind of fixed income instruments which you get in funds like debt short duration funds. And this portion of the portfolio would be geared to generate regular income month after month. You can set up an SWP, or every start of the year you can move the next 1 year's income requirement into a liquid fund or into your bank account, which will secure your income need for the next 12 to 15 months, and you keep rolling. And for the remaining investment, you can keep invested in a mix of equity and debt, and you keep rolling this portfolio forward. So this way you will be able to derive regular income, while at the same time there is reasonable equity which will generate returns to take care of your long-term income needs. That is the kind of approach that one can think about in retirement. और वडोदरा से हमारे श्रोता कवि लाइन पे हैं. कवि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. Sir, good evening. Sir, I feel very happy to talk to the Market Mantra team, and I express my thanks to the entire Market Mantra team for doing a wonderful. Thank you so much. Yeah, go ahead, put your question. My question is about mutual funds. So actually, if someone has a plan of parking some lump sum of 10-20 lakhs rupees in the mutual funds, for example, if you pocket into the HDFC Flexi Cap Fund or Parak Flexi Cap Fund, with the motto of having a regular income, that is through systematic withdrawal plan, with the motto of having some regular income, if you park some 20 lakhs rupees, what should be our rate of withdrawal with the motto of having some capital appreciation also? It should be of 8%, 10%. So, what such is? That is my question. Sure. So your question has two dimensions. One is what should be the rate of withdrawal? Well, ideally, your rate of withdrawal can be somewhere around 4 to 5%, and avoid taking it beyond 6%, because then you run the risk of withdrawing it too fast and drawing down your accumulation too fast. So aim for a withdrawal of say anywhere between 4 to 5% per annum, and you can break it further down into monthly installments, which you can set up an SWP of. And for this 20 lakh rupees, the kind of asset allocation, well, we were just discussing about that plan to have at least 25, 30, 35% in equity, and the remaining amount can be in debt. And this kind of asset allocation should be good enough to provide you with anywhere between 8.5-9% return. Of course, nothing is guaranteed, so don't take it as an assured return. But broadly, with this kind of a mix, it should support your income goal. और चलते हैं अगली खबर की ओर. टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती करते हुए 90 रुपए से 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक्री करने का निर्णय लिया है. उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य तथा जन वितरण विभाग ने एक वक्तव्य में कहा है कि देश के 500 से अधिक बिक्री केंद्रों की स्थिति का
पुनर्मूल्यांकन करने के बाद आज से 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर टमाटर की बिक्री करने का फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए टमाटरों की बिक्री दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा के कई बिक्री केंद्रों पर शुरू हो चुकी है। इन स्थानों पर मौजूदा बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कल से और शहरों में बिक्री शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि सरकारी हस्तक्षेप के बाद टमाटरों के थोक मूल्य में कमी आई है। सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वचनबद्ध है। And yeah, Ashutosh, before we take more calls and other news items, I want to, come back to this point. Some of our callers also discussed that, having a large cap fund, a flexi cap fund, and as you said, a small cap and a mid cap. Does it complete the entire spectrum of the market, or do you think one should have something more, maybe debt also, a fund, a debt fund, and maybe some sector specific funds or a fund focused on gold? Sure. So, as you rightly said, the first thing when you're planning out your portfolio is the asset allocation. And for asset allocation, your first guidance should be what is the investment need and how long a need this is. What is the time horizon? And that will determine what kind of, portfolio you have. For a very long-term portfolio, for a person who is willing to take risk and does not get too disturbed by the ups and downs of the market, even a all equity portfolio can be fine. And broadly, within different categories like large cap, flexi cap, mid and small, most of the investment needs would get covered. There are just too many categories of funds the mutual fund industry has to offer, but we believe that beyond these few categories, ELSS, if you have tax saving as a need, but beyond these 4 or 5 categories, you really don't need much else. If you are a believer in the passives, then of course index funds can be a pretty viable option, but sector funds mostly are avoidable. That's because if you have very specific convictions on some sector, then maybe you can take some small allocation to that, but let your fund manager take that call. That's the whole purpose of investing in a mutual fund, that you do not actively decide which are the sectors where you need to be investing. You invest in a diversified fund, which is a flexi cap or a mid or a small, and let the fund manager take that call. And let's take a look at some of the other news items as well. Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, today said that successful launch of Chandrayaan-3 will boost space startups and space entrepreneurs. Addressing a summit in New Delhi, he called upon young scientists and youth of the G20 nations to explore the space possibilities through lucrative startup ventures, even in a joint mission mode, to herald a new age of space entrepreneurship. आशुतोष जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. बहुत धन्यवाद आपका. And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pump in nearly 31,000 crore rupees into the Indian equities market in the first fortnight of July. Inflows crosses 1 lakh crore rupees in 2023. And government reduces the concessional selling price of tomatoes to 80 rupees per kilogram. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.